Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am your English instructor Samreen Akhtar Saitu from Star Grammar School System Nusharaf Feroz. Today I am going to teach you the lesson The Master and the Donkey from class 8th. Actually, The Master and the Donkey is a story type lesson. In this story there are three main characters which are mentioned: the master, the dhobi and the donkey. Short introduction of this lesson is that the master has been mentioned a weak person who deceived a simple washerman by saying that he could change donkeys into a man. The washerman is a simpleton person. So he takes his donkey to the master and pays 400 rupees to the master for changing his donkeys into a man. Dear students, you all know how is it possible to change an animal into a man. So for further climax, I am going to read the lesson regularly. So before reading the lesson, please take out your books and notebooks to note the important information from this lesson. Now let's start. The master and the donkey. Master and gada. In places like Pakistan or India, Pakistan या हिंदुस्तान जहिड़नि इलाइक़नि में we call a teacher in villages a master. असां ॻोठनि में उस्ताद खे मास्तर चवंदा आहियूं. Well, चङो. Once there was a master who lived in a village. हिक दफ़े हिकिड़ो मास्तर हूंदो हुयो जेको ॻोठ में रहंदो हुयो. He had many young boys to teach. हिन खे केतिरा ई नौजवान छोकिरा पढ़ाइण जे लाइ हूंदा हुया. Some of them were clever and some were stupid. उन्हनि मां कुझु होशियार हूंदा हुया ऐं कुझु बेवकूफ़. The master used to think they were as stupid as asses. मास्तर सोचींदो हुयो इहे ईअं बेवकूफ़ आहिनि जीअं गधा. You know donkeys, तव्हांखे ख़बर आहे गधा. One day he shouted at these stupid ones. हिक ॾींहुं हिन उन्हनि बेवकूफ़नि मां हिकिड़े बेवकूफ़ ते रड़ियूं कयूं. I have made men out of asses before. मूं पहिरियां बि गधनि मां माण्हू ठाहिया आहिनि. And I can do it again. ऐं मां इहो वरी करे सघां थो. Now as it happens, हाणे थिए ईअं थो. Just as he was shouting this, जीअं ही रड़ियूं करे रहियो हुयो, a dhobi or washerman was passing by the classroom. त हिकिड़ो धोबी स्कूल जे कमरे जे भरिसां लंघियो. And he heard what the master said. ऐं हिन ॿुधो त मास्तर छा चयो. The dhobi thought, धोबीअ सोचियो, that's wonderful. इहो तमामु अजीब आहे. He can make donkeys into a man. हीअ माण्हुनि मां गधनि मां माण्हू ठाहे सघे थो. And he rushed and told his wife all about it. ऐं ही तकड़ में घर वियो ऐं सॼो किसो पंहिंजे घरवारीअ खे ॿुधायो. Now the dhobi and his wife didn't have any children. हाणे हिन जे घरवारीअ ऐं हिन खे को बि ॿार कोन हुयो. At last we can have a son. आख़िर असांखे हिकिड़ो छोकिरो थी पवंदो. They said, उन्हनि चयो. We can take our favorite donkey to the master साहिब. असां मास्तर साहिब ॾांहुं पंहिंजी पसंदीदा गधा खे वठी वेंदासीं and get him changed into a man. ऐं हिन खे माण्हूअ में तब्दील कराईंदासीं. Together they went to see the master. उहे गॾिजी मास्तर सां मिलण लाइ हलिया विया. Excuse me, माफ़ कजो, they said, उन्हनि चयो. Could you use your powers to change our donkey into a man? छा तव्हां पंहिंजे ताक़तुनि खे इस्तेमालु करे असांजे गधा खे माण्हूअ में तब्दील कंदव? The master was amazed. मास्तर हैरान थी वियो. Actually, amazed is an adjective in grammar and its meaning is हैरान थी वियो and its synonym is surprised. It's impossible. इहो नामुमकिन आहे, he said, हिन चयो. But the dhobi kept on and on at the master. पर धोबी मास्तर ते ज़ोर भरींदो रहियो. And so the master began to think
तंहिंजे करे मास्तर इहो सोचणु शुरू कयो दैट त दिस वॉज सम काइंड ऑफ मेडमैन, त ही को चरे क़िस्म जो माण्हू आहे. नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन केप्ड ऑन एंड ऑन. दिस इज़ एन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश. इट इज़ अ वर्बल एक्सप्रेशन विच मीनिंग इज़ emphasized, ज़ोर भरियो. And also there is another word, madman. Madman is an adjective in grammar and its meaning is stupid. Very well, he said. चङो, हिन चयो, I'll do it. मां इहो कंदुसि. It will be very very hard. इहो तमामु ॾुखियो आहे. So it will cost 400 rupees. तंहिंजे करे इन्हीअ ते 400 रुपया ख़र्चु ईंदो. And it will take 4 whole months to do. ऐं इन्हीअ खे करण जे लाइ पूरा 4 महीना लॻंदा. ऑल राइट, ठीकु आहे, सेड द धोबी. धोबीअ चयो, इट्स अ डील. इहो हिकिड़ो मुआइदो आहे. डील इज़ अ नाउन इन ग्रामर and its synonym is agreement, मुआइदो. And he went home, ऐं ही घर वियो and fetched the money and the donkey. पैसा ऐं गधो खणी आयो and came back to the master. ऐं मास्तर ॾांहुं वापसि आयो. That's a fine donkey. इहो ॾाढो भलो गधो आहे, said the master. मास्टर चयो, he will make a great man. इहो हिकिड़ो अज़ीम इंसान बणिजंदो. When the धोबी had gone, जॾहिं धोबी हलियो वियो, the master turned to one of his boys. The master उन्हनि छोकरनि मां हिकिड़े छोकिरे ॾे आयो. Take the donkey away. हिन गधे खे परे वठी वञ. Take him deep into the jungle. ऐं हिन खे गहरे झंग में वठी वञ. Tie him up. इन्हीअ खे ॿधी अच. And leave him there. ऐं हिनईअ खे उते छॾे अच. 4 months later, 4 महीननि खां पोइ, the धोबी came back. धोबी वापसि आयो. Well, चङो, he says. ही चवे थो, is it done? छा मुंहिंजो कमु थी वियो आहे? And the master said, ऐं मास्तर चयो, where have you been, my friend? मुंहिंजा दोस्त, तूं किथे हुई? Your donkey has become a very important government man. तुंहिंजो गधु हिकु तमामु अहम सरकारी माण्हू थी वियो आहे. He is a काज़ी. ही काज़ी थी वियो आहे. The काज़ी of कराची. कराचीअ जो काज़ी. You'd better go there and see him. तुंहिंजे लाइ इहो बहितर थींदो त तूं उते वञ ऐं हिन सां वञी मिल. Will he recognize me now? छा ही हींअर मूंखे सुञाणंदो? That he is a famous man. छो त ही हिकिड़ो मशहूरु माण्हू थी वियो आहे. Said the धोबी. धोबीअ पुछियो. Certainly, बेशक. Said the master. मास्तर चयो, बस just so that he can recognize you. पर ही तोखे जल्दी ईअं सुञाणंदो. Take the gunny bag. ॻूण खणी वञ. You used to put his feet in. जंहिंमें तूं हिन खे खाधो खाराईंदो हुई. Gunny bag means ॻूण. A big bag, a large bag. He'll certainly remember that. ही उन्हीअ खे जल्दीअ में सुञाणे वठंदो. The धोबी was delighted. धोबी तमामु घणो ख़ुशि थी वियो. Delighted means happy, ख़ुशि. His donkey had become an important man. हिन जो गधु तमामु अहम माण्हू थी वियो हुयो. The काज़ी of कराची. कराचीअ जो काज़ी. He left straight away for the city. ही जल्दीअ में शहर ॾांहुं हलियो वियो. Straight away is also an expression. Its meaning is immediately and it is an adverb. When he got there, जॾहिं ही उते पहुतो, the Qazi's court was in session. त काज़ीअ जे कोर्ट में इजलास हुयो. Oh Allah be praised. Subhan Allah. Said the धोबी. धोबीअ चयो, the master sahib has changed our donkey into such an important man. मास्तर साहब असांजे गधे खे हिकु अहिड़े अहम माण्हूअ में तब्दील करे छॾियो आहे. A judge of a big city, जेको हिकु वॾे शहर जो जज आहे. After that, the धोबी tried to catch the Qazi's eye. उन खां पोइ धोबीअ काज़ीअ जो ध्यानु छिकण जी कोशिशि कई. To catch the Qazi's eye means to draw someone's attention, कंहिंजो ध्यानु छिकाइणु. It is also an verbal expression. He moved into places where the Qazi could see him easily. ही उन्हनि जॻहनि ते वियो जिते काज़ी हिन खे आसानीअ सां ॾिसी सघे. He waved at the Qazi. हिन काज़ीअ ते हथु लोॾियो. Quick. But the Qazi was very busy with his work. पर काज़ी पंहिंजे कम में तमामु घणो मसरूफ़ हुयो. And took no notice of him. ऐं हिन जो को बि ध्यानु न ॾिनो. When this didn't seem to be working, जॾहिं हिन महसूसु कयो त कमु न थी रहियो आहे, the धोबी remembered what the master had said. त धोबीअ यादि कयो त मास्तर छा चयो.
द फीडिंग बैग, हा खाधे वारी गोथरी. And he started waving the feeding bag about at this very important man. ऐं हिन खाधे वारी गोथरीअ खे अहम माण्हूअ जे अॻियां लोॾणु शुरू कयो. द काज़ी स्टॉप राइटिंग, काज़ीअ लिखणु बंदि कयो. एंड लुक्ड अप फ्रॉम हिज डेस्क, ऐं हुन खे पंहिंजे टेबल खां तके निहारियो. द धोबी हेल्ड अप द फीडिंग बैग, धोबी खाधे वारी गोथरीअ खे झले बीठो हुयो. एंड स्माइल्ड एट हिम, ऐं हिन ॾांहुं मुस्कुरायो. द काज़ी सा दिस, काज़ीअ इहो ॾिठो. एंड वॉन्डर्ड, ऐं हैरान थियो वॉट द फनी मैन वॉज अप टू. ही मश्करो माण्हू छा करे रहियो आहे. ब्रिंग मी दिस मैन, हिन माण्हूअ खे मूं ॾांहुं आणियो. ही सेड टू वन ऑफ हिज गार्ड्स, हिन पंहिंजे मुहाफ़िज़नि मां हिकिड़े मुहाफ़िज़ खे चयो. द धोबी वॉज वेरी प्लीज़्ड एट दिस, धोबी उन ते ॾाढो ख़ुशि थियो. एट लास्ट ही हैज़ रिकग्नाइज़्ड मी, आख़िरकार हिन मूंखे सुञाणे वरितो आहे. रिकग्नाइज़ मीन्स सुञाणो, टू नो. द काज़ी सेड टू हिम, काज़ीअ हिन खे चयो वॉट इज़ ऑल दिस नॉनसेंस, इहा कहिड़ी बेवकूफ़ी आहे. द धोबी फेल्ट एट, धोबीअ ॾुख महसूसु कयो. एंड शाउटेड द काज़ी, ऐं काज़ीअ ते रड़ियूं कयूं. यू डोंट रिकग्नाइज़ योर ओनर, तूं पंहिंजे मालिक खे नथो सुञाणी. यू स्टूपिड डोंकी, बेवकूफ़ गॾह. Then he waved the feeding bag under the Qazi's nose. पोइ हिन खाधे वारी गोथरीअ खे काज़ीअ जे नक जे हेठां लोॾियो. And said, ऐं चयो didn't you eat corn from this every morning, छा तूं हर सुबुह जो हिन मां खाधो न खाईंदो हुएं. Just because the master has made a human being out of you, इहो सभु कुझु इन करे त मास्तर तोखे गॾह मां माण्हू ठाहियो आहे. यू शुडंट फॉरगेट यू आर रियली अ डोंकी, तोखे इहो कॾहिं बि न विसारणु घुरिजे त हक़ीक़त में तूं हिकिड़ो गॾह आहीं. एंड देन ही सेड टू द काज़ी, ऐं पोइ हिन काज़ीअ खे चयो कम लेट्स गो होम, अचु त घर हलूं. द काज़ी थॉट द मैन वॉज सम काइंड ऑफ लूनेटिक, काज़ीअ सोचियो त ही को ज़हनी मरीज़ आहे. लूनेटिक इज़ एन एडजेक्टिव इन ग्रामर एंड इट्स मीनिंग इज़ अ पर्सन हू इज़ मेंटली इल, a person who is mad man. So he tried to be nice to him, तंहिं करे हिन उन सां सुहिणो सलूक करण जी कोशिशि कई. But the धोबी didn't listen, पर धोबीअ न ॿुधो. At last the Qazi had to have him thrown out by his guards. आख़िरकार काज़ीअ खे पंहिंजे मुहाफ़िज़नि जे ज़रिए हिन खे उछलराइणो पियो. The धोबी shouted as he was pushed out by the guards. धोबीअ रड़ियूं कयूं जंहिं वक़्तु मुहाफ़िज़ हिन खे धिके रहिया हुआ. यू यूज़ टू बी अ डोंकी, तूं गॾु हूंदो हुएं. एंड आई पेड मनी टू मेक अ मैन आउट ऑफ यू, ऐं मां तोखे माण्हूअ में तब्दील कराइण जे लाइ पैसा अदा कया आहिनि. दिस इज़ हाउ आई एम रिपेड फॉर माई ट्रबल्स, हाणे मां पंहिंजी तकलीफ़ुनि जी अदायगी कीअं कंदुसि. ट्रबल्स मीन्स डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलातूं, ऐं इहो ग्रामर में नाउन आहे. बेटर अ डोंकी देन एन अनग्रेटफुल मैन, बहितर हुयो त नाशुक्र माण्हूअ खां तूं गॾु भलो हुई. अनग्रेटफुल मीन्स अनथैंकफुल, नाशुक्रगुज़ार. फ्रॉम देयर द धोबी वेंट स्ट्रेट टू द मास्टर, उतां खां सिधो ई धोबी मास्तर ॾे हलियो वियो. एंड ऑफर्ड हिम एन अदर 400 रुपीज़ टू चेंज द काज़ी बैक इन टू अ डोंकी, ऐं हिन खे ॿिया 400 रुपया आछा काज़ीअ खे वरी गॾह में तब्दील कराइण जे लाइ. ऑल राइट, ठीकु आहे, सेड द मास्टर, मास्तर चयो. कम बैक विद द मनी टुमारो, सुभाणे पैसनि सां अचिजांइ. एंड ऑल द टाइम द धोबी वॉज थिंकिंग ऑफ हाउ ही वॉज गोइंग टू गेट हिज ओन बैक ऑन द काज़ी, ऐं हीउ सॼो वक़्तु सोचींदो रहियो त हीअ काज़ीअ खां पंहिंजो बदिलो कीअं वठे. मीन वाइल, एतिरे में, मीन वाइल इज़ एन एडवर्ब एंड इट्स सिनोनिमस फॉर नाउ फॉर द मोमेंट. Meanwhile, एतिरे में द मास्टर हैड द डोंकी ब्रॉड बैक फ्रॉम द जंगल, मास्तर गॾह खे जंग मां वापसि घुराए वरितो. वेन ही रिटर्न, जॾहिं ही वापसि आयो, द धोबी रिकग्नाइज़्ड हिज डोंकी स्ट्रेट अवे, त धोबीअ पंहिंजे गॾह खे जल्दीअ में सुञाणे वरितो. सो ही सेस टू द डोंकी, तंहिं करे हिन गॾह खे चयो डू यू रिकग्नाइज़ मी नाउ, छा तूं हींअर मूंखे सुञाणी थो. डू यू, सुञाणी थो. यू डिडंट, तूं न पियो सुञाणी. वेन यू वर अ काज़ी, डिड यू, तूं मूंखे न पियो सुञाणी जॾहिं तूं काज़ी हुई. ओ नो, आई डोंट सपोज़ आई वॉज गुड इनफ फॉर यू, मां हाणे तसवुर बि नथो कयां त मां तुंहिंजे लाइ एतिरो सुठो हुयुसि. वॉज देट इट, छा ईअं हुयो. वेल, चङो. नाउ यू विल नो हू आई एम,
हाणे तोखे ख़बर पवंदी त मां केरु आहियां. At that is expression or phrase. Its meaning is in addition or furthermore. At that, उन सां गॾोगॾु the धोबी held the cart of the poor donkey. धोबीअ ग़रीब गॾह जे चंबुक खे खयों and thrashed him all the way home. ऐं घर ताईं पहुचण ताईं उनखे उन सां मारींदो रहियो. Now look at the exercise A from your notebook which I have picked. Answer the following questions. हेठनि सवालनि जा जवाब ॾियो. Define what a master is. बयान कयोसि त मास्तर छा खे चइबो आहे. Why did the master said that he had made before asses and he could do it again. मास्तर ईअं छो चयो त हिन गॾहनि मां पहिरियां माण्हू ठाहिया आहिनि ऐं ही वरी ईअं करे सघे थो. Now the third question is, what is one source of master's income is suggested in the passage. हिन पैसेज में मास्तर जे कमाईअ जो कहिड़ो ज़रियो ॿुधायो वियो आहे. Now the fourth one is, do you think that a washerman was a simpleton. तव्हां छा था सम्झो त धोबी हिकिड़ो बेवकूफ़ माण्हू हुयो. Now the last and fifth one question is, what did the master tell to washerman to do so that the Qazi could recognize him. मास्तर धोबीअ खे छा करण जे लाइ चयो त जीअं काज़ी हुन खे सुञाणे सघे. This is exercise B, which is also taken from your textbook. Match the words with the meaning. Actually, there are two columns have been arranged for you to match the meaning. Pick out the one word and match the meaning of other column with the words. Now write down this exercise and also note on your notebook. This is exercise C, which is also picked from your textbook. Read the following sentences and give the meaning of the underlined expressions. इन जुमलनि खे पढ़ो ऐं जेके अंडरलाइंड एक्सप्रेशन्स आहिनि उन्हनि जी माना ॾियो. Now the first statement is, but the धोबी kept on and on at the master. पर धोबी मास्तर ते ज़ोर भरींदो रहियो. Actually, there is a use of expression which I have discussed you during the reading. Kept on and on. Kept on and on means emphasized, ज़ोर भरियो. Now the second statement is, I'll play along with him. मां हिन सां खेॾंदुसि. Along with is an expression and its meaning is accompanied by, with, सां गॾु. Third statement is, he left straight away for the city. ही तकड़ में शहर ॾांहुं हलियो वियो. Straight away is also an English expression and its meaning is immediately. It is an adverbial expression. Fourth one, after that the धोबी tried to catch the Qazi's eye. उन खां पोइ धोबीअ काज़ीअ जो ध्यानु छिकाइण जी कोशिशि कई. Actually, the original meaning of this expression is to catch someone's eye, कंहिंजो ध्यानु छिकाइण, to draw someone's attention. The Qazi wondered what the funny man was up to. काज़ी हैरान थी वियो त ही मश्करे क़िस्म जो माण्हू छा करे रहियो आहे. Was up to meaning what was doing. It is also an expression which is used in this sentence. Now the last and sixth one is, the धोबी was thinking of how to get his own back on the Qazi. धोबी सोचींदो रहियो त ही काज़ीअ खां पंहिंजो बदिलो कीअं वठे. Get his own back means avenge, बदिलो. Now read down these expressions again and also use these expressions in your own sentences. For your attention, hope you understood.